कि मेरी आवाज आ रही है? ओके, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, लेट मी कंटिन्यू। मैं चाहता था वो एग्जाम्पल कम से कम हम करें। तो अभी तक हमने जो देखा कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसकी जो nth टर्म है इट बिकम्स इवेंचुअली जीरो। यानी इफ समेशन n runs from 1 to infinity converges, then लिमिट n approaches infinity, हमने एक थ्योरम किया था अभी, is equal to 0। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, वही मैं बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। और उसके लिए हमने दिखाया, उसके लिए एज ए थ्योरम हम कर सकते हैं कन्वर्स इज नॉट ट्रू बिकॉज you can take summation 1 by n and runs from 1 to infinity, then although summation limit n approaches infinity 1 by n is equal to 0, but summation n runs from 1 to infinity 1 by n diverges। तो हमने इसको प्रूव करने के लिए, जो हम प्रूव करना ये चाहते थे, हमने कहा था लेट एस एन बी इक्वल टू 1 प्लस 1 by 2 प्लस इसका nth पार्शियल सम, राइट। देन what we do, हमने कहा अगर ये कन्वर्स अपना, सपोज assume to the contrary, summation 1 by n runs from 1 to infinity converges, it would imply that Sn as a sequence converges। तो मैंने क्या कहा, मैं इसकी एक सब सीक्वेंस लेता हूँ S sub 2n, n runs from 0 to infinity, so ये होगा basically this is the sequence S1, S2, S4, S8, S16, so on and so forth। S1 जो है that's just equal to my A1, that's equal to, यानी मैंने क्या लिया था, S1 is equal to 1, S2 is equal to 1 plus 1 by 2, S3, S4 जो है वो होगा 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4, and of course S8 होगा इसी तरह से 1 plus 1 by 2 up to 1 by 8। इसी तरह से S sub 2n जो इसकी nth टर्म होगी 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 raised to power n। Now we claim that S sub 2n, n runs from 1 to infinity, does not converge। ये हमारा है। So let's see। पहले तो ये है, या now S1, S2, पहले अगर मैं देखूं S2n किसके बराबर है, S2n is equal to 1 plus 1 by 2 plus so on and so forth 1 by 2 raised to power n। S2n plus 1 किसके बराबर होगा, it will be of course 1 plus 1 by 2 plus, इससे ज्यादा ही होगा, एक्चुअली काफी ज्यादा होगा, 2 raised to power n। उसके बाद आएगा 1 by 2 raised to power n, उसके बाद next 1 by 2 raised to power n plus 2 until we get to the next power of 2, that is 2 raised to power n plus 1। Now clearly S2n plus 1 is bigger than equal to S2n for all n greater than equal to 1, which implies that S2 raised to power n plus 1, ये जो S2n है and runs from 1 to infinity, is a monotonic increasing sequence। We claim that S2 raised power n is greater than equal to n plus 2 by 2 for all n belonging to the natural numbers। ये हमारा क्लेम है, जरा चेक करते हैं।
S20 होगा S1, that is clearly equal to 0 plus 2 by 2, यानी 1 के बराबर है, which is the same thing. So that's true. मतलब n की जगह 0, यहाँ भी 0, तो satisfy होता है. तो S2 raised power 1 would be equal to S1 plus S2. वो किसके बराबर है? It would be 1 plus 1 by 2, that's equal to 3 by 2. That's again equal to 1 plus 2 by 2. तो ये इसको satisfy कर रहा है, right? तो हमें मतलब we prove it by induction. Okay, this is because it's a statement about natural numbers, so we can prove it with the help of mathematical induction. Now suppose that induction के लिए हम क्या करेंगे? Suppose that S2 sub k जो है it is greater than equal to k plus 2 by 2. We show that अगर ऐसा है तो next वाला है इसका nth partial sum. This is greater than equal to k plus 1 plus 2 by 2. ठीक है? So let's see ये क्या है. Now S2 raised to power k plus 1 should be equal to, it should be equal to 1 plus 1 by 2 plus so on and so forth. 1 by 2 raised to power k, लेकिन हमें इससे आगे जाना है. So 2k plus 1 until we get to the next power of 2. That is 2 raised to power k plus 1. Now this by induction hypothesis is greater than equal to k plus 2 by 2 plus 1 by 2 raised to power k plus 1 plus so on and so, oh sorry, 2k plus 1 है यहाँ पे कुछ नहीं है, plus 1 by 2 raised to power k plus 1. This is by induction hypothesis. जैसा कि तुमने किया होगा बहुत बार. सो ये इससे बड़ा है, इंडक्शन हाइपोथेसिस हमने की, क्योंकि इतना जो है बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस से बड़ा है. बाकी now this is further greater than equal to, in fact much greater than equal to plus 1 by 2 raised to power k, क्योंकि इसका नहीं 2k plus 1, क्योंकि इसका जो है वो डिनोमिनेटर छोटा है, नहीं बड़ा है, तो इसलिए ये छोटा है. Because 2 raised power k plus 1 जो है वो less than है 2 raised power k plus 1 in general. So that means 1 by 2 raised power k plus 1 is of course greater than equal to 1 by 2 raised to power k plus 1. Again 1 by 2 raised power k plus 1. Again मतलब मैं लिख सकती, ये सभी 2 raised power k plus 1 से बड़े हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर इनका छोटा है. और ये टर्म्स कितनी है? ये टर्म्स कितनी है टोटल? देखो, they should be 2 raised to power k plus 1 minus 2 raised to power k, है ना. टोटल ही 2 raised to power k plus 1, और मैंने निकाला उनमें से 2k पहले ही निकाले, तो this is number of terms. तो this is actually यहाँ मैं लिखता हूँ इतने times. So this is basically equal to k plus 2 divided by 2 plus 2k plus 1 by minus 2k divided by 2 raised to power k plus 1. That's equal to k plus 2 by 2. 2 plus k common, right? अंदर क्या बचेगा? 2 minus 1 divided by 2 raised to power k plus 1. And of course 2 minus 1 is 1, 2k power khatam. So it is actually k plus 2 divided by 2 plus 1 by 2. That's equal to k plus 2 plus 1 divided by 2. That's equal to k plus 1 plus 2 divided by 2. Yani I have shown that is S2 raised power k plus 1 is greater than equal to k plus 1 plus 2 divided by 2. Hence, by the principle of mathematical induction, S2n is greater than equal to n plus 2 by 2 for all n, right? Which implies that
which implies that ये जो sequence है S2n is not bounded above, क्योंकि इससे बड़ा है, और this is not bounded above because natural numbers are not bounded above. So is not bounded above and runs from 1 to infinity. And since S to n is monotonic increasing, जो कि हमने अभी किया, अगर कोई sequence है जो monotonic increasing है, it is not bounded above, so then S sub to n runs from 1 to infinity, diverges to infinity. So therefore Sn, n runs from 1 to infinity, has a subsequence that diverges to infinity, which implies that therefore it cannot converge, which is a contradiction. So therefore summation 1 by n runs from 1 to infinity diverges. ये अच्छा मुझे लगता है हो गया. So अब हमने इससे ये देखा कि you could have, it's possible that limit n approaches infinity is equal to 0. Then it is possible that summation n runs from 1 to infinity converges. लेकिन ये हमेशा true है. Limit n approaches infinity an अगर 0 नहीं है, then summation an would diverge. It may be true, but this is always true. Okay, तो हमने कुछ examples देखी, कुछ results किए. Then what I have is the next thing. How should I do some exercises? कुछ मुझे तो इसमें क्योंकि series का है, let me see some exercises जो हम कर सकते हैं. इस पे अच्छी बुक है ये मेथड्स ऑफ रियल एनालिसिस, वैसे दी हुई है तुम्हारे बुक्स में. Now how about this? अगर तुम्हारे पास कोई सीरीज है A1 plus A2 plus so on and so forth, right? ये एक सीरीज है, it converges. अगर मैं इसमें एक टर्म कम करता हूं, A2 plus दूसरी सीरीज में ये लेता हूं, क्या ये भी कन्वर्ज करेगी, है ना? सवाल ये. हाँ सर 2 बजे नेक्स्ट क्लास है, अभी लंच भी नहीं किया. ओ तुम्हें भूख लग गई? चलो एक बार करेंगे. चलो फिर किसी ने भेजा है, इतना ही पढ़ेंगे. चलो ठीक है, लेट्स कट इट हियर. मैंने सोचा था थोड़ा और करेंगे. सीआर तुमने अटेंडेंस ले ली इनकी? यस सर. ओके, लेट मी एंड इट हियर.